नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक और मल्टी बैगर स्टॉक एनालिसिस वीडियो में। तो ये इस कंपनी का नाम है स्टेलेंट सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड। अभी हम लोग आगे चल के इसका एनालिसिस करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। Disclaimer: I am just sharing my personal view on my own study as a trader. Everything I discuss is for educational purpose only. Please consult your financial advisor before taking any decision. Trading in equity market involves risk. Sanjeev Kumar means me is not responsible for any loss or gain. Most of people incurred losses in trading, hence don't take trade on basis of this analysis. Do your own analysis before taking any trade. अगर हम स्टेलेंट सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड का टेक्निकल इंफॉर्मेशन हम देखते हैं तो ये मल्टी बैगर स्टॉक है विथ हाई परसेंटेज इंक्रीज ईयर आफ्टर ईयर एंड मंथ आफ्टर मंथ। तो अगर हम देखते हैं डेली, जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं, वन डे में अगर हम 100 रुपया लगाते हैं तो वो 1.19 मतलब 2 रुपये बढ़ जाएगा, 102 रुपया हो जाएगा। अगर हम एक वीक में बात करते हैं तो ये 8% बढ़ जाएगा, मतलब 100 रुपया 100 + 8 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से एक मंथ में 100 + 48, 148 मतलब लगभग 150 रुपीज हो जाएगा। 3 मंथ्स में हम लगाते हैं तो ये 253.35% वो हो जाएगा। मीन्स हम 100 रुपया लगाते हैं तो हो जाएगा 253 रुपीज। सिमिलरली अगर हम 2 इयर्स अगर हम 6 मंथ्स में देखते हैं तो 4.79 मीन्स 5 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर हम 100 रुपया लगाते हैं तो 500 रुपया के आसपास हो जाएगा। 1 ईयर में अगर हम देखते हैं तो जितना हम पैसा लगाते हैं उसका 16 टाइम्स हो जाएगा। 2 इयर्स में उसका 49 टाइम्स हो जाएगा। 5 इयर्स में हम देखते हैं तो 109 टाइम्स, मतलब 1 लाख रुपया लगाते हैं तो 109 लाख हो जाएगा, 1 करोड़ से ज्यादा। और अगर 10 लाख लगाते हैं, हम यहाँ पे 10 इयर्स में 1 लाख लगाते हैं तो वो 128 लाख, मतलब 1 करोड़ 28 लाख हो जाएगा। हम देख सकते हैं ये काफी क्रेजी इम्प्रूवमेंट है, का बहुत ज्यादा मूवमेंट है इस स्टॉक का। ये अभी स्टॉक का क्या सिचुएशन है, अभी हमको पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना इसका ग्रोथ है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा है, आगे चल के हम और सब डिटेल में देखते हैं। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें, स्टेलेंट सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड को डिटेल्स ऑफ बिजनेस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसा है, तो इनकॉर्पोरेटेड 1991, ये कंपनी 1991 में स्टार्ट हुई। स्टेलेंट सिक्योरिटी लिमिटेड इज द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज। उस समय जो हुआ वो बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। इन फाइनेंशियल ईयर 2025 कंपनी amended its memorandum of association includes NBFC। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी उसको कन्वर्ट कर दिया। अभी क्या है, कंपनी जो है वो लेन दे सकती है, लीजिंग कर सकती है, हायर परचेज कर सकती है एंड फाइनेंसिंग फॉर वेरियस एसेट्स कर सकती है। कोई घर खरीदना चाहता है, कोई गाड़ी खरीदना चाहता है, कोई बड़ा बिजनेस खरीदना चाहता है, वो सपोर्ट कर सकती है, पैसा दे सकती है as a loan along with issuing guarantee. It also added investment and holding activities, allowing the company to buy and sell and trade. कंपनी इसके थ्रू बाय सेल ट्रेड कर सकती है एंड मैनेज सिक्योरिटीज, एक्वायर स्टेक्स एंड मैनेज सरप्लस फंड्स। एडिशनली इट इंट्रोड्यूसेस एडवाइजरी, उसके अलावा एडवाइजरी सर्विसेज फोकस्ड ऑन कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड कॉमर्शियल मैटर्स में ये प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब कंपनी ने अपना जो स्कोप था वो काफी बढ़ा दिया, अभी ज्यादा काम करना स्टार्ट कर दिया। अभी हम डिटेल में देखते हैं कि अभी जैसा हमको पता है इंडिया एज ए फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, पूरे वर्ल्ड में अभी सबसे फास्ट ग्रोथ जो है वो इंडिया का है। एंड Stellant Security is a company which is providing loans allowing the companies to trade, जैसा हमने अभी ऊपर देखा, ट्रेड करने के लिए प्रोवाइड करती है, प्रोवाइडिंग एडवाइजरी सर्विसेज भी है। अभी ये बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि नए नए बिजनेस बन रहे हैं, लोगों को लोन की जरूरत है, लोगों को एडवाइस की जरूरत है।
and in coming days the future of this company expected to continue. और coming days में ये बोला जाता है 21st century is the century of India, तो आने वाले दिनों में अभी काफी स्कोप है। सो कंपनी का प्रोस्पेक्ट्स आगे बढ़ने का काफी अच्छा है एज पर माय एनालिसिस। अगर स्टेलेंट सिक्योरिटीज की लिमिटेड के हम फंडामेंटल एंड मैनेजमेंट डिटेल्स देखें तो सेक्टर फाइनेंस है, कैटेगरी स्मॉल कैप, लेस देन 5000 करोड़ है, फेस वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज 10, मार्केट कैप 46 करोड़, नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब ओनली 7 lakhs, बहुत कम है, इसके शेयर्स जनरली करोड़ में होते हैं, नंबर ऑफ शेयर होल्डर 1082, एवरेज शेयर अगर हम पर पर्सन डिवाइड करें तो 647 है। अभी क्या है, ये कंपनी अच्छी है और स्टॉक्स अभी कम है, तो आने वाले दिनों में ये स्टॉक्स की संख्या बढ़ाएंगे तो जो आदमी अभी से एंट्री लेगा उनको काफी फायदा होगा। अभी आगे देखते हैं। द मैनेजमेंट टीम इज लेड बाय मंगल राठौड़ एंड इंक्लूड सेवरल अदर टीम मेंबर्स। की टीम मेंबर्स की अगर बात करें तो मंगल राठौड़ द प्रोमोटर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, महिपत इंद्रमल मेहता इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, दीपक जगताप इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड भावेश बाफना नॉन इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अभी हम स्टेलेंट सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड के स्ट्रेंथ की बात करें, विच डिसाइड्स फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, फ्यूचर कैसा रहेगा ये अभी का स्ट्रेंथ पे डिसाइड करेगा। तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज ग्रोथ फैक्टर, सेकंड इज हाई मोमेंटम स्टॉक एंड थर्ड इज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। सो अगर हम पहले ग्रोथ फैक्टर की बात करें तो राइजिंग रिटर्न ऑन इक्विटी। सो अभी जो इक्विटी पे रिटर्न है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, हेंस ग्रोथ है उसमें। इट इज एन अंडर वैल्यूड स्टॉक, और वैल्यू जो है अभी अंडर वैल्यूड स्टॉक है। कंसिस्टेंटली वेरी हाई CAGR, अभी ईयरली काफी अच्छा रिटर्न निकाल रही है कंपनी, तो CAGR काफी अच्छा बढ़ा के दे रही है। इंक्रीज इन स्टॉक ओवर 5 years, और ये कंटिन्यूसली 5 years देख रही है, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले टेक्निकल डिटेल्स में देखा था। स्ट्रॉन्ग क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ इन EPS, अर्निंग पर शेयर में क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ आ रहा है। अभी ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर टू क्वार्टर, नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज कर रहा है और प्रॉफिट मार्जिन अच्छा मिल रहा है। एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूविंग फ्रॉम लास्ट 2 years एंड एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूविंग, sorry, this is duplicate, so annual net profit improving from last 2 years. High momentum stock, so price above short, medium and long term moving average. So we see why it is high momentum, because the stock is above short, medium and long term moving averages. Next, outperforming this stock versus industry over 1 month and 1 year, means in the long term and in the short term company is performing better than its peers and its industry as a whole, making new 52 weeks high, hence continuously bullish stock. High momentum stock continuously fastly moving upside and making high profit, so it is high momentum stock. A stock gained more than 45% in 1 month, केवल एक मंथ में 45% इंक्रीज हुआ है एंड 3 months में 130% ये कॉस्ट गेन किया है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, अभी हम देखते हैं कंपनी विथ जीरो प्रोमोटर प्लेस, देयर इज नो प्लेज, हेंस इट इज जीरो प्रोमोटर प्लेस। Promoter increasing shareholding, hence promoters see good future of the company. PEG lower than industry PEG, effectively using its capital to generate profit, hence ROCE improving in last 2 years. Similarly, ROE is improving from last 2 years and effective managing assets to regenerate profit, so ROA improving from last 2 years. Company able to generate net cash and improving net cash flow from last 2 years. Stellant Securities India Limited weakness which decides future prospects. So there is strength also, there is weakness also. Since RSI is at 99, hence
overbought situation, maybe there will be a little selling possible. So it can be happen in any stock. A stock में selling and buying तो चलता ही रहता है. Liquidity of a stock is very low, hence difficult in buying and difficult in selling. इसमें liquidity बहुत कम है, तो अगर बाई करते हैं तो जल्दी आपको कोई सेलर नहीं मिलेगा जो बेच रहा हो और आप खरीद सके. और अगर आपने खरीद लिया है तो आज जिस टाइम में बेचना चाहेंगे उस प्राइस पे उस टाइम में कोई खरीदने के लिए नहीं मिले, तो थोड़ा ऊपर नीचे करके बेचना पड़ेगा. Though the company is reporting repeated profits, it is not paying out a dividend. Company is not paying dividend, so most of the growth company not paying dividend because they are using the same money in making more profits and moving upside. Working capital days have increased from 24.3 days to 71.8, which is not good, and it can be managed. Company will try to manage this one. If we see Stellant Securities India Limited monthly chart, then we can see in July 2021, July end it was at 412 level, and at August end it was at 604 level. So there is a big jump from 412 to 604 level. Hence, it is moving very high rate, very high momentum. It is moving from last July month to August month, and now it is in from August moving towards the September. So chance is that by the end of September it will go to 799 level. Also, I request you to put your expectation, that is this stock will go up to what level in the end of the September, and after that we can match there. So please put in the comments your remarks, what is your expectation. So if we check Stellant Securities weekly chart, we can see by making steps week after week after week, all week they are making green candles on the right side, and it is moving ahead, moving towards upside. If we see the second chart, it is the volume chart, and we can see sometimes there is a high volume, but most of the time there is low weekly volume. And the third chart from the top is RSI. We can see RSI value is very high. It is going like 97.65, 97, 99.65. If we see on the last, this is showing how a stock is moving towards upside. If we check daily chart analysis of Stellant Securities, then we can see the top chart is for the candles, and we can see there is a very less volume, so the candle is not showing properly. It is showing just point, dotted point, and dot 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 like that. Before beneath that there is moving averages 20, 50, 150 and 200. So all of them moving towards upside. It shows that a stock is very strong and it will move upside continuously. So if we check Stellant Securities India Limited, whatever graph we check just now, and if we do analysis, it will show how the present performance of this stock is. So we have checked that candle are above EMA 20, EMA 20 is above EMA 50, EMA 50 is above EMA 150, and EMA 150 is above EMA 200. So all are stacked one after another, and the stock is moving towards upside. Also RSI 9 overbought range and having value 97. RSI 3 and RSI 9 is above weighted RSI 21 days, so this is good to buy stock. Volume is very low and a stock moving up. PE ratio currently moving upside. Price of a stock is increasing in terms of earning. Delivery, when we check, it is 100%, means a stock is not available easily. Whoever is taking, they are taking as delivery. So 100% the stock is going in the delivery. Entry now is good as this is continuously moving up,
and is a multi-bagger stock and strong now, and chance it will move further very strongly. If we talk about a strategy how to buy and sell, so buy a small amount and keep with a strong SL and continue buy every month like SIP, systematic investment plan. Stellant Securities India Limited fundamental analysis. One, how strong are basics of this stock? We can see how strong is the basic of this stock so that we can be confident that it will not go down easily. So EBITDA or operating profit margin is increasing from very sharply from last 5 years. So before 5 years, there was no much profit, but now from last 5 years there is profit is increasing. There is profit or no, that is second thing, but profit is increasing. Before negative, but now positive and going towards positive side. PAT, if we talk about net profit, is increasing from last 5 years. Expense and sales from last 3 years moving in the right direction to provide profit. Interest is almost zero, very little interest the company is paying. Cash from operating activity is positive and increasing from last 3 years. So cash from operating activity positive and three years से continuously वो बढ़ रहा है. Holding by promoter पहले कम था and year 2024 में बढ़ा and now वो constant है 62.42 पे. DIA holding is fixed, not decreasing, hence it is considered positive. ROCE very high 106.67, which is very high and very good. PEG value 0.06, good as below than its peers. DE, debt to equity, is 0, which is the best level. CR, current ratio is 45.2, required is more than 1.5, hence it is very good. Company has delivered good profit growth of 239.67 in over last 3 months, means more than 200 times, means more than 200%, means 2 times whatever you put the money, it will become, like if you put 1 crore, it will become more than 2 crore in 3 months only. And same 6 months, 4 times, more than 4 times, and in 1 year more than 16 times. So this is very high growth stock. Stellant Securities India, few fundamental analysis to how strong is the stock basic. So if we go more detail, reserve was negative, but now it is increasing in positive direction from last 2 years. So it will help the company if there is some problems comes, then they have the money as a reserve and they can utilize in that very problematic situation. A stock PE 15.2 is less than industry PE 35.9, so stock is cheap as per PE. Public holding is 34.88%, still very high. It should be less than 30%. EPS is 41.2, which is greater than 15, hence it is very good. ROE is 81.9, it is very good. Generally, it is good if more than 10. Working capital days is increasing, which is not a good sign, and debtor days increased from last year, and it is not a good sign too. Future of the company seems good as per profit growth, sales and expenses. If you want to know that now level of stock is 627, if somebody like from my knowledge, if I want to buy, then I will buy at 627. I will strong put my stop loss at 601 and my target will be 799. And we will, how we will do this one, we will just buy some, then next month we buy, then next month we buy, every month we buy and accumulate. When 799 come, then we see what is the situation of me and we will take the decision accordingly. So thanks for watching. Please like, comment, subscribe and share my videos, and please guess, will this stock will move up? Go do your own analysis and please comment in this video
whether it will move upside or no. So thanks for watching. See you in the next video. Thank you.